Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so much for watching my last video and sharing your feedbacks. So guys, last video में हमने सीखा like how to create a table, how to design the table, and today we are going to learn about how to insert the data into the table. So insert and create का सबसे बड़ा जो गाइज एक डिफरेंस होता है, लेट मी टेल यू. लाइक हमारे पास सपोज हमने कबर्ड बनाया है, right? So जिसमें we have partitions into we have created four partitions. So in one partition we have the section for the shirt, one is for pants, one is for hankies, and one is for winter wears, right? So अभी तक हमने उसमें अपना कोई भी क्लॉथ नहीं रखा है. अभी तक हमने सिर्फ अपनी कवर डिज़ाइन की थी. सो क्रिएट इज टू जस्ट डिज़ाइन द टेबल. हमने अभी तक सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, अभी तक हमने इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा इनटू द table, right? So to insert the data into the table we need to use the insert keyword. Insert into, then table name, which is products. Now the column name, and we can see here from here category, category description, price, product ID, and then we have values. So category, suppose we have toy, and description kids, and price we had 25, 5. प्रोडक्ट आईडी इज वन, सिंस हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है. एंड प्रोडक्ट नेम, सो प्रोडक्ट नेम इज right. This is the query to insert the data into the table. So we need to use the insert keyword, then into, then the table name, and in the brackets we will be defining first the columns name, then values, and inside the brackets again their values. Now hit control plus enter on your system, and okay, so we have not selected any database yet. Okay, let me copy it first and then this. Okay, now edit line. Now I have entered my query. Click on go button, and one row is inserted. Now if I again click on this table name, so by default it will hit the select star from products, so it will fetch all the records. We can see the product ID is one, so one row is already there. Its name is electronic car, which we inserted, the description, the price, and the category, right? So सबसे बड़ा डिफरेंस जो इंसर्ट और क्रिएट में होता है, क्रिएट से हम अपने टेबल को डिज़ाइन करते हैं, बट इंसर्ट से हम एक्चुअल में डेटा पुट करते हैं. लाइक अभी हमने जो एग्जांपल समझा था कबर्ड का, तो वहाँ पे हमने कबर्ड को डिज़ाइन किया, पार्टीशन किया, बट इंसर्ट मीन्स इंसर्ट कमांड को यूज़ करके हमने उन्हें एक्चुअल में शर्ट रखी है, राइट? सो insert is to insert the data into the design table. आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है, आपको इंसर्ट का सिंटैक्स क्लियर है. मैं फिर भी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ. इंसर्ट का सिंटैक्स है इंसर्ट, देन इनटू, इंसर्ट इज कीवर्ड, देन इनटू, देन द टेबल नेम, देन देयर कॉलम्स नेम, and then values, and after the values we will be defining the values, categories, then categories description. So इस फॉर्मेट में we can insert a new record into the table,
राइट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।